Today we will study algebraic identities, which are very important part of this chapter, and exercise 2.5. So let's start. The very first identity is x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. This is a very basic identity and you have used in previous classes also. Next identity, x minus y whole square is equals to x square minus 2xy plus y square. इन दोनों आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है? x प्लस वाई होल स्क्वायर में प्लस का 2xy होता है एंड माइनस वाई x माइनस वाई स्क्वायर में माइनस का 2xy. Third identity, you have applied this in first chapter also. X square minus y square is equals to x minus y, x plus y. Fourth identity, x plus a into x plus b. So in this way the product is done. Identity number 5, x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2zx plus 2yz. In this way, this is the expanded form of this given expression. Sixth identity, x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3xy multiplied by x plus y. अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में भी लिखी जाती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे. हम पहले x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y और फिर y के साथ करेंगे तो 3x y स्क्वायर. In this way it can also be written. Seventh identity, x minus y whole cube x cube minus y cube minus 3xy ब्रैकेट x minus y. इसमें पूरे में प्लस है, इसमें पूरे में माइनस है, तो ये लर्न करने में इजी हो जाता है. इसकी भी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर 3x स्क्वायर y. अब माइनस माइनस प्लस 3x y square. In this way. Then comes 8th identity, x cube plus y cube is equals to x plus y into x square minus xy plus y square. X cube minus y cube is equals to x minus y, x square plus xy plus y square. In this way, 9th identity is done. Now last identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So these are the very important identities